of the day, because that came in as a highlight last evening when the arrest of the Aam Aadmi Party minister happened of Satyendra Jain. Now this is FIR related previously to a case of Hawala transactions and disproportionate wealth, in the case where over 4 crore rupees that was routed to Hawala in the name of the Aam Aadmi Party minister, who was said to be the Delhi health minister, who has been arrested by Hawala transaction case. Now, ED has been stemming the case from the CBI FIR that was filed in the disproportionate asset matter in 2018, with the ED in its investigation found that between the years 2015 and 17, Satyendra Jain allegedly received accommodation entries to the tune of 4.81 crores from shell companies. Now these entries were made in against cash transfer to Kolkata-based entry operators through Hawala route, and the amount then was used to buy agricultural land in and around Delhi. Now sources say the probe agencies say the money thereafter was diverted for political purposes as well. 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके थे, 7 बार। कभी ईडी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, और इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है, और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। पिछले 7 सालों में जब जब सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप आए सामने, तथ्य आए सामने, तब अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर सत्येंद्र जैन को बार बार क्लीन चिट दी, क्योंकि इस करप्शन में केजरीवाल खुद शामिल हैं। और मुझे लगता है कि आज सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद हवाला, काला धन, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी कंपनियां, वो सभी चीज जो मैं बार बार पिछले 5 साल से कह रहा था, वो सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जीवेश शाह जो हवाला ऑपरेटर था, उसने अपने बयान में लिख के दिया कि मैंने सत्येंद्र जैन को उनके हवाला कंपनी के जरिए उनको पैसा दिया। अब चूंकि ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है, अब मैं पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी से कि आप सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कब कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा दम भरा था पंजाब के अंदर कि आपको भ्रष्टाचार पे आप कोई जीरो टॉलरेंस है। तो अब बताइए कब और कितनी देर में आप अरविंद केजरीवाल साहब अपने सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करेंगे मंत्रिमंडल से। आज सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है हवाला कांड में, और एक दिन में नहीं हुई, बहुत समय से ईडी इसकी पूरी जांच तक नीचे तक पहुंच के जब मुझे लगता है तथ्य और सबूत आ गए हैं, तब गिरफ्तारी हुई है। ये छोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम मांग करते हैं हाई मोरल ग्राउंड जो अरविंद केजरीवाल जी आपने स्थापित किए हैं, बिना देरी किए सत्येंद्र जैन जी को मंत्री पद से बर्खास्त करिए। जो पंजाब में किया है वो दिल्ली में दोहराइए, वरना आपकी कथनी पंजाब में कुछ और करनी दिल्ली में कुछ और दिख रही है। आम आदमी पार्टी का ये अधिकार है कि वो इस लड़ाई को कानूनी तौर से मजबूती से लड़े, और अगर सत्येंद्र जैन पाक साफ होकर निकलते हैं, दोषी नहीं पाए जाते हैं, दोबारा मंत्री पद क्या मुख्यमंत्री बना दीजिए दिल्ली का, हम उसका स्वागत करेंगे। All right, going across to Mayank right outside the ED office for a quick update. Good morning to you, Mayank. This is a case that is based on the CBI FIR lodged against the AAP minister in 2017 under Prevention of Corruption Act, when he was accused of having laundered money through 4 companies linked to him allegedly. Well, absolutely. It's a very old case, Amita. You're absolutely right. And this is a, case taken up by ED from the FIR of the CBI, So the case was first registered in 2017, and then it was picked up by the, Enforcement Directorate. We are currently at the Enforcement Directorate General Office, where Satyendra Jain is currently at. He was, summoned yesterday at around 11 a.m. And after the initial round of, investigation, the ED officials detained him here. So they will be taking him to the hospital around
10 a.m. we are hearing that, and then after that he will be produced in the court, and then on the future course of action as far as the investigation and what sort of investigation and where the ED wants to take this case will be taken care of. Going back to the case, this case dates back to 2017, and when Satyendra Jain was booked under the Prevention of Corruption Act, for acquiring disproportionate asset, as the CBI said. He acquired asset of 1.47 crore, which CBI estimated is 217% jump, from his legal income. And then the, enforcement director came into the picture, booking him under the provisions of Prevention of Money Laundering Act. So from there on, the ED found in its investigation that when in the time period between 2015 2016, when Satyendra Jain was a public servant, he still is a public servant. Remember, he is a very important minister in the cabinet of Arvind Kejriwal in the national capital. So in that time period between 2015-16, the 4 cell companies where Satyendra Jain had direct or indirect control, because remember, ED always also found that before 2013 he had resigned as a director from those companies, but he had some indirect control over those companies where funds were received from hawala operators, and neither Mr. Jain or those 4 companies could produce any details about the source of those funds, and that's why he has got under the lens of the enforcement directorate. So political reactions that are also coming in with the BJP in Congress demanding that the Aam Aadmi Party's chief Arvind Kejriwal walks the talk and sacks the Arm Minister. Meanwhile, the Aam Aadmi Party has hit back, saying that there are polls that are happening in Himachal Pradesh, and Satyendra Jain was the Himachal Pradesh in charge, and the BJP is losing. That is why the arrest is happening with the misuse of the agencies. For the moment, Mayank, thanks very much for joining in. You're watching the Morning News Hour. We'll be back after a short break.